let's start understanding. Uh, I think I am audible now. So let's start understanding about the tiger reserve in the country. So whenever any question come on the tiger reserve, we need to understand two or three points. So tiger reserve. तो कभी भी टाइगर रिजर्व पे क्वेश्चन आए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज ए बायोस्फीयर रिजर्व जो कि पूरे इकोसिस्टम की बात करता है टाइगर रिजर्व्स आर स्पीसीज सेंट्रिक मीन्स it is a particular it is for the particular species. Okay. uh, and why we choose tiger? So tiger is an apex predator and it is also known as the umbrella species. Okay. क्योंकि एक अंतर है बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व में, जो चीज याद रखना है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व था दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट लीगल प्रोटेक्शन. जो उसका कोर जोन था that is under the national park or any kind of wildlife sanctuary that is protected in the wildlife protection act. But जो टाइगर रिजर्व है they have this strong mandate under the wildlife protection act. Okay, this we need to understand. And on the top of the wildlife protection act 1972, we launched the project tiger in 1973. So it launched at Jim Corbett National Park. So let me show you the map uh, of all the tiger reserve. So we have taken it from the direct official website of NTCA. So this is the in Uttarakhand we have the Jim Corbett National Park. So this national park only is the first tiger reserve that is launched as part of the Project Tiger. So administrative mechanism है कि we have National Tiger Conservation Authority. So जो National Tiger Conservation Authority है that is under the Ministry of Environment and Forest Conservation. Okay. तो जो मिनिस्टर होंगे वो दे ही विल बी दी चेयरमैन ऑफ द एनटीसीए. उनको हेल्प करने के लिए देयर विल बी 3 एमपी एंड देयर इज ए पैनल ऑफ 8 एक्सपर्ट्स. जो इंस्पेक्टर जनरल होंगे फॉरेस्ट के ही विल बी द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द एनटीसीए. दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हियरार्की. जो स्ट्रक्चर होगा अगेन इट इज द सेम. देयर इज ए कोर एरिया and there is a buffer area. So the core buffer architecture it is also following in the tiger reserve also. In the core area वो जो होगा वो particularly no human activity allow करेगा. उसका स्टेटस या तो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का होगा. जो बफर एरिया होगा वहाँ पे वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन दोनों ही रह सकते हैं. ओके. करेंटली इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व है. ओके. वर्ल्ड का 80% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन वो इंडिया में है. अब देखिए 58 टाइगर रिजर्व को याद करना तो मुश्किल है. देयरफॉर जो जो इम्पोर्टेंट हैं जो कि पीवाईक्यूज में आए हैं और जो कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ में हैं पिछले 1-2 साल में that we will cover, I think, and later we will cover along the time. Okay, so let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व इन कंट्री. तो सबसे पहले दैट इज द टाइगर रिजर्व दैट वी ऑल्सो heard in case of our biosphere reserve part. So this is the Panna Tiger Reserve. So Panna Tiger Reserve, particularly in the Madhya Pradesh, it is particularly in news due to केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट. पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ केन रिवर पास हो रही है. ओके. नाउ ड्यू टू दिस केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका बहुत सारा एरिया सबमर्जिंग जोन में आ जा रहा है. ओके. विथ कोर एरिया. सो हम लोगों ने उस वाले वीडियो में बात किया था वेयर वी want to discuss about the development and the conservation we can give the Panna biosphere reserve. Then we the news the famous one is Simlipal Tiger Reserve that is in Odisha. So the pseudomelanistic black tiger, जो black tiger है, the only area in India where the black tiger, only India or the only reserve in world which is the home to this black tigers. Okay. यहाँ इशू क्या है, यहाँ पे महुआ कलेक्शन चल रहे हैं रेगुलर फायर्स की वजह से देयर इज एन इशू है. नाउ द 56 टाइगर रिजर्व जो कि लेटेस्ट बना है दिस वन दिस गुरु घासीदास कामोट पिंगला टाइगर रिजर्व.
So ये 56 टाइगर रिजर्व है देश का. And this Guru Ghansidas is actually in Chhattisgarh, but it is around the border of the Odisha, Jharkhand as well. So it covers, you can see, Jharkhand, MP, Chhattisgarh, and the uh, Odisha. So, so it acts like a corridor link. So Guru Ghansidas, Tamor Pingla Tiger Reserve. This is also an important tiger reserve. Now, the one that is also very important here, that is, there is this Kaziranga National Park. This Kaziranga is also a tiger reserve. Okay. So Kaziranga is actually the highest tiger density. अगर कोई बोले कहाँ है, so you can say the Kaziranga. Okay. But यहाँ पे इशू आ रहा है क्या? जो ब्रह्मपुत्र का फ्लड है, that uh, allow the tigers to migrate to the higher ground of Karpi and Long Hills. Okay, this is one issue. And in the Andhra Pradesh and the Telangana region, we have one important tiger reserve, the Nagarjuna Sagar Srisalam. So this Nagarjuna Sagar Srisalam, you can say it is uh, the largest tiger reserve by area in India. So, so this Nagarjuna Sagar Srisalam, that is in the border of Andhra Pradesh Telangana corridor. So this is the largest tiger reserve in country. So we have in Assam, we have an beside the Kaziranga, we have Orang Tiger Reserve. This Orang Tiger Reserve is the smallest tiger reserve in India, and it is called Mini Kaziranga. There is a Nam Dhapa Tiger Reserve in the Himachal Pradesh. Okay, this Nam Dhapa Tiger Reserve, you need to understand, this is the highest altitude tiger reserve, and it is famous for four big cats. टाइगर भी पाए जाएंगे, लेपर्ड भी पाए जाएंगे, स्नो लेपर्ड भी पाए जाएंगे, क्लाउडेड लेपर्ड भी पाए जाएंगे. आई विल शो यू द इमेजेस. You need to see the cloud leopard. This is cloud leopard. So this is the clouded leopard, and this snow leopard we have already seen, and snow leopard, clouded leopard, normal leopard, and tiger is found. So Namdapa Tiger Reserve is famous for that. We have already gone through the, you can see, Jim Corbett National Park. That is the oldest and the first one to be launched under the uh, Project Tiger. And if somebody asks like which tiger reserve is the highest tiger population in a tiger reserve, so highest tiger population in a single reserve, so we will say that is the origin for but only. Okay. Now we have in Tamil Nadu, we have Satyamangalam Satyamangalam Tiger Reserve. So this Satyamangalam Tiger Reserve in Tamil Nadu, basically it wants two times Tiger Awards for doubling the tiger population. So the link between the Eastern Ghat and the Western Ghat is the Satyamangalam Tiger Reserve. You need to remember the name. In Rajasthan, you need to understand the tiger populations are in Rajasthan as well. So regions like Dholpur Karoli, so you need to remember this as well. That in the Dholpur Karoli, the Ranthambore is famous for Ranthambore Tiger Reserve. So they are particularly, this is the Chambal Basin. So these areas are also famous for the tiger. So uh, you want to understand because tiger का एक लॉन्ग इकोसिस्टमेटिक जोन होता है, वो लंबा हैबिटाट में ट्रेवल करते हैं. So there is a software called M Stripes. So we need to patrol and ecologically monitor the tigers through the technology called M Stripes. Okay. So
I have seen news right now. So these two tiger reserve, Kanha and Pench. So this Kanha and Pench tiger reserve, it is also in news due to Kanha Pench corridor is creating. So a lot of roads are passing through this Kanha and Pench tiger reserve. It is also in news in MP. And so this is the Tarai region. So this Corbett, Pilbhit, Dudhwa, and Balmiki. So this is actually the Tarai arc. So this 800-kilometer area, this is the Tal area. So this is also a tiger corridor. We understood the Rajaji, Corbett, Pilbhit, Dudhwa, and Balmiki. So you need to remember by this, and you need to. This is the Tal complex, and you need to understand here is the Nilgiri. There is a Western Ghat complex. So when you see the Bandipur, Bandipur is famous. In Tamil Nadu, Bandipur actually in Karnataka, Mudumalai in Tamil Nadu, Wayanad in Kerala. Uh, so, so this is the largest conglomerate, you can say, uh, that is in the Nilgiri Western Ghat complex. Okay. तो लाइक हमने अब कवर कर दिया है मोस्ट ऑफ द फेमस टाइगर रिजर्व्स इन कंट्री दैट इज इन न्यूज़. अब एक बार आप लोगों को मेरे साथ अगर रिवाइज करना है तो वी विल गो थ्रू ऑल 58 टाइगर रिजर्व्स एंड आई विल स्पीक आउट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट एसोसिएटेड विद दैट, जिससे आपको वो लंबे समय तक याद होगा. तो स्टेट वाइज चलते हैं. लेट्स जूम इट अ बिट इन द एरिया ऑफ उत्तराखंड. So in Uttarakhand, first of all, we start with the Corbett Tiger Reserve. So the Corbett Tiger Reserve is the India's first tiger reserve in 1973 under the Project Tiger. It has been created. ये याद रखना है. Second fact that जो देश का highest tiger density है वो Corbett National Park में है. Done. Second tiger reserve here is Rajaji Tiger Reserve. So ये जो range है ना, you can say this range is Shivalik range. Okay. एंड यहाँ पे जो राजा जी टाइगर रिजर्व है ये आपका एलिफेंट और टाइगर के कोएग्जिस्टेंस के लिए फेमस है. ठीक है. नाउ वी विल गो टू उत्तर प्रदेश. नाउ इन उत्तर प्रदेश यू सी देयर इज अ टाइगर रिजर्व कॉल्ड दुधवा. हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है कि ये जो कॉर्बेट, पिलभीत, दुधवा और वाल्मीकि ये टाल एरिया के अंदर आता है. ठीक है. जो आपका यू कैन से what is this area called? So 400 kilometers Tal area. Okay, Tarai area. Okay. So Dudhwa, actually this Dudhwa, this is bordering नेपाल. यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? दुधवा में टाइगर मिलेगा और उनका जो प्रे है दैट इज स्वamp डियर यहाँ पे मिलेगा आपको. लेट मी शो यू द इमेजेस ऑफ स्वamp डियर. ओके, ये आपका दुधवा टाइगर रिजर्व में मिलेगा. Now, the Pilbhit Tiger Reserve. So, this Pilbhit Tiger Reserve, uh, it also won TX2 award for doubling the number of tigers. So, ये repeat हो गया. एक आपका है सत्यमंगलम Tiger Reserve in the Tamil Nadu that won the TX2 award to doubling the tiger population. The first one जो ये award जीता था, that is the Pilbhit Tiger Reserve. Okay, and let's come to Balmiki Tiger Reserve that is in Bihar. Okay, so there's only tiger reserve that is in Bihar. ये नेपाल के यहाँ पे चितवन नेशनल पार्क है उसके साथ है. ठीक है. That comes to Central India. In MP we have lot of tiger reserve. So let's start with Kanha Tiger Reserve. Already we have discussed the news, the Kanha Pench corridor that is in news. So the Kanha Tiger Reserve, like the टाइगर रिजर्व जिसका मैस्कॉट था, तो
कान्हा टाइगर रिजर्व का मैस्कॉट कौन था? भूर सिंह था, बारहसिंगा, जो एक बारहसिंगा है, भूर सिंह। लेट मी शो यू दैट मास्कट। भूर सिंह। This is the mascot, भूर सिंह, बारहसिंगा। So this is associated with Kanha Tiger Reserve. Now there's a Pench Tiger Reserve. Uh, so the in the Rudyard Kipling the Jungle Book, the setting here is from the Pench Tiger Reserve only. Okay, this is the funny fact around that. Now there is a tiger reserve on the top of there is a Bandhavgarh Tiger Reserve. Now the Bandhavgarh Tiger Reserve is it is one of the centrally in the central India highest tiger density area. Okay. Now we have the Panna Tiger Reserve. So Panna Tiger Reserve again that was in news due to the Ken Betwa link. Okay. We have Satpura Tiger Reserve. Now Satpura Tiger Reserve is due to a lot of medicinal plants यहाँ पे मिलते हैं सतपुरा टाइगर रिजर्व में. There is Sanjay Dubri Tiger Reserve. Sanjay Tiger Reserve actually it is in news due to the latest like 56 Tiger Reserve which Guru Ghansidas. So Sanjay Dubri and the Guru Ghansidas they are linked. Okay. And here is one of the newest Pirangana Durgavati Tiger Reserve. Okay, it's like compensatory habitat for the Panna Tiger Reserve. So due to the Ken Betwa link, so they have created one compensatory habitat here in the Pirangana Durgavati Tiger Reserve. So this is one thing. So let's come to Chhattisgarh. Chhattisgarh here we have Indravati Tiger Reserve. So this Indravati Tiger Reserve, it gets its name due to Indravati River. Here we have the wild buffalo. Uh, so there is this USTR. Its name is Udanti Sita Nadi. Okay, it's a watershed of you can say Mahanadi River. This is also a tiger reserve. Then Achan Kamar is a biosphere reserve. Achan Kamar Amarkantak. So this Achan Kamar is again the part of Amarkantak biosphere reserve. Okay, this is also a tiger reserve also. Guru Ghansidas, we already heard of that. Now come to Maharashtra. So Maharashtra, let's start with Melghat. So there is a Satpura range. So there is a Vindhya, there is Satpura. In Satpura range, we have Melghat. This Melghat, it is Tapti river यहाँ से बहती है. There is a Tadoba Andhari. Okay. There is a Tadoba Andhari Tiger Reserve. Okay. Now this Tadoba Andhari Tiger Reserve is Maharashtra's oldest and largest tiger reserve. Okay. There is Sahyadri Tiger Reserve. Uh, okay, so this is the only tiger reserve that is in the north of the Western Ghats. Okay, northern Western Ghats of Maharashtra. Yes, every tiger reserve in the Maharashtra is here in the eastern side. Okay, and there is one tiger reserve named Navegaon Nagzira. Okay, Navegaon Nagzira Tiger Reserve. So this is one of the bird area. So Boar Tiger Reserve is there. So you know the Orang Tiger Reserve and the Boar Tiger Reserve. They are the smallest tiger reserves in country. Okay. Now come to Odisha. We have the Simlipal already we have covered, and there is one uh, Satkosia Tiger Reserve. So Satkosia Tiger Reserve in the Mahanadi Gorge जहाँ बनाता है वहाँ पे. In Rajasthan, if we go, we already heard Ranthambore, and this extension is only the Dholpur Karoli. Okay, and Sariska Tiger Reserve is here, the famous Sariska Tiger Reserve. So Sariska Tiger Reserve is uh, first tiger reserve to successfully relocate tigers. Okay, uh, after local extinction. So we have Mukundara Hills here. Mukundara Hills. Mukundara Hills may actually there is a confluence of Chambal, Kali, Aho rivers. There is a confluence of Mukunda Hills. It's become important tiger reserve. There is Ramghar Bisthari. Uh, Ramgarh Bisdari is actually the buffer for Ranthambore. Okay. Dholpur Karoli we understood. That's the latest one in the Chambal Basin.
We have in Jharkhand, we have one tiger reserve, Palamu Tiger Reserve. Okay, the only one in Jharkhand. So it is one of the first nine tiger reserve that was created as part of Project Tiger. So we so in Andhra Pradesh we have Nagarjun Sagar Tiger Reserve, okay, the largest tiger reserve. So in Telangana we have Kawal Tiger Reserve. So Kawal Tiger Reserve, it is in the Sahyadri mountain range. Okay, so Indravati, Kawal, they all are in the Sahyadri range. Sahyadri Tiger Reserve. And there is a Srisailam में ही नागार्जुन सागर Amrabad Tiger Reserve है. So if you go to Karnataka, if you have seen the Bandipur Tiger Reserve, there is a Nagarhole Tiger Reserve. Nagarhole Tiger Reserve only is Rajiv Gandhi National Park. Okay, काबिनी रिवर यहाँ पर आती है. uh, Bhadra, it is actually the Bhadra river, Bhadra Tiger Reserve. And there's a Kali Tiger Reserve for Black Panther. Black Panther यहाँ पे मिलता है. The Kali Tiger Reserve that is nearby Goa. There's a Mahadi National Park in Goa. So Kali Tiger Reserve, they're alongside there. See Tiger Reserve. So there's a BRT temple. So this Satyamangalam, BRT, Muddumalai, they are just linked between the Eastern Ghat and Western Ghat. Okay, in Tamil Nadu, we seen Muddumalai, Annamalai, Satyamangalam, Muddumalai, Annamalai, Satyamangalam, and this Kalakar Munda, Kalakar Mundanturai. Okay, so the southernmost tiger reserve it is in the, it's not in Kerala, it's in Tamil Nadu. Okay, so in Kerala also we have seen the Periyar. So this Periyar, that is the part of this Satyamangalam, sorry, this Rivilpur Magamalai Tiger Reserve. Okay, so Periyar Tiger Reserve. Uh, okay, so यहाँ टाइगर एक्सप्रेस टूरिज्म होता है यहाँ पे. सो इको टूरिज्म के लिए फेमस है पेरियार टाइगर रिजर्व. फिर परम्बिकुलम हाईएस्ट एंडेमिज्म है यहाँ पे परम्बिकुलम में. ओके, एंड नाउ इफ यू कम टू नॉर्थ ईस्ट, कम फॉर द काजीरंगा. काजीरंगा में वन हॉर्न राइनो मिलता है, हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है. मानस, वी हैव ऑलरेडी हर्ड मानस टाइगर रिजर्व. ये तुम्हारा रॉयल मानस नेशनल पार्क है भूटान का, उसका में ट्रांस बाउंड्री पे पड़ता है. Okay. There's a Nameri, Nameri or Orang. Orang is like mini Kaziranga. Okay. Arunachal, we have now Dapa, that is highest altitude, and there is a Pake Tiger Reserve. Pake Tiger Reserve is actual for Hornbill Nest Adoption Program. Hornbill Nest Adoption Program यहाँ पे चला था. And कामलंग, यहाँ पे कामलंग रिवर है. ओके, की वजह से मिजोरम में यू हैव वन डाम्पा टाइगर रिजर्व. मिजोरम में डाम्पा टाइगर रिजर्व है. ये बम्बू फॉरेस्ट है. यहाँ पे क्लाउड लेपर्ड ज़्यादा है, टाइगर कम है. देयर इज वन बक्सा टाइगर रिजर्व. ये बंगाल के हैं. ये लाइक टाइगर्स भूटान में जाते हैं यूजिंग द बक्सा टाइगर रिजर्व. वेस्ट बंगाल में भी हैव सुंदरबंस. सो ये है जो कि जहाँ मैंग्रोव्स है और जहाँ टाइगर्स है, दैट इज द सुंदरबंस. So we have gone through all 58 tiger reserves. We have gone through important facts. So the latest tiger reserve that is in the list is, you can say, the Madhav Tiger Reserve in the Madhya Pradesh and Ratapani Tiger Reserve in Madhya Pradesh. So the both tiger reserve uh, here is the Madhav Tiger Reserve in MP and this Ratapani Tiger Reserve. These are the latest one that is added in the list. So if we give a quick summary
जो आपको याद रखना है, लगभग लगभग हमने 58 टाइगर रिजर्व्स की बात की, बट 58 टाइगर रिजर्व्स में जो जो चीज़ आपको याद होना ही चाहिए, स्टार्टेड विद द उत्तराखंड से ऊपर अपने पास टाइगर रिजर्व नहीं है। उत्तराखंड में वी हैव कम विद द राजाजी। राजाजी इज ऑल्सो ए नेशनल पार्क। सो व्हेन यू हर्ड अबाउट राजाजी टाइगर रिजर्व, दिमाग में क्या याद आना चाहिए? सो इन राजाजी टाइगर रिजर्व में याद आना चाहिए, ये शिवालिक रेंज में है और यहाँ पे हाथी और शेर बाघ दोनों मिलता है। ओके, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बना था। हाईएस्ट टाइगर मतलब हाईएस्ट टाइगर किसी एक रिजर्व में मिलेगा, दैट इज द कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जब कॉर्बेट, पिलवित, दुधवा और वाल्मीकि, एक्चुअल में ये पिलवित, दुधवा, वाल्मीकि ये सब आपका उत्तर प्रदेश में है, बट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द तराई रीजन। सो दिस ए टाइगर कॉरिडोर देयर, ये याद रखना है, नहीं याद रहेगा। अब दो टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड मिला था टाइगर पॉपुलेशन डबल करने के लिए। देयर इज वन इन साउथ दैट इज नेम्ड एज सत्यमंगलम एंड द फर्स्ट वन इज पिलवित टाइगर रिजर्व, ये याद रखना है। दुधवा नेपाल से सट रहा है, सो वहाँ स्वाम्प डियर भी मिल रहा है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड रिसोर्स फॉर द टाइगर्स। ओके, यहाँ तक याद हो गया। हाँ, सो हेयर वी हैव so here we have one or important Ranipur Tiger Reserve. So Ranipur Tiger Reserve is actually, so in Uttar Pradesh we have around four tiger reserve: Pilvit, Dudhwa, Valmiki, and Ranipur. So Ranipur, the tigers between the Terai region and the Panna Tiger Reserve. So Panna Tiger Reserve become important ड्यू टू केन बेतवा प्रोजेक्ट, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। अब पन्ना रिजर्व है, अब आपको याद रखना होगा वीरांगना दुर्गावती, क्योंकि पन्ना में इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसका कंपेंसेटरी जो टाइगर रिजर्व बना है दैट इज दी वीरांगना दुर्गावती। एसोसिएट करके पढ़िए, याद रहेगा। ओके, बिहार में एक ही है, दैट इज द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। चितवन नेशनल पार्क से जुड़ रहा है नेपाल के। इन MP वी हैव कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा में ही यू नीड टू अंडरस्टैंड, कान्हा पेंच कॉरिडोर बन रहा है, दैट यू नीड टू रिमेंबर, कान्हा पेंच। सो जो पेंच है, एक्चुअली पेंच MP में भी है, पेंच महाराष्ट्र में भी है। तो जो पेंच है दैट इज ओनली दी प्लॉटिंग एरिया फॉर द रुडियार्ड किपलिंग जंगल बुक। ओके, और कान्हा जो है दैट हैज देयर मास्कॉट नेम भूर सिंह। ओके, भारत सिंह का, दैट इज द मास्कॉट फॉर द कान्हा टाइगर रिजर्व। ओके, बांधवगढ़ है, संजय डुबरी गुरु घासीदास से जोड़ लीजिए। झारखंड में एक पलामू है। इन इन उड़ीसा सिमलीपाल आप ब्लैक टाइगर से एसोसिएट किए। सतकोसिया को आप महानदी के गोर से एसोसिएट कीजिए। अ, और यहाँ पे क्या है, उदांती सीता नदी है, दैट्स आल्सो वाटर सेट रीजन फॉर। इंद्रावती आपका इंद्रावती रिवर के नाम पे है। और व्हाट इज द फेमस हेयर, बोर इज द स्मॉलेस्ट वन हेयर। This Ratapani and Madhav, they are the latest one that is added to the tiger reserves list. This in Rajasthan also, remember there is the tiger population. So Sariska, Ranthambore. Sariska is the first one जिन्हें टाइगर मंगाना पड़ा था क्योंकि उनका लोकल पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गया था। सो रणथंभौर का ही एक्सटेंशन है ढोलपुर करौली, दे आर दी चंबल बेसिन है यहाँ पे। सो दी मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ बिसधरी, रणथंभौर, ये सब याद रखिए कि ये सब आपका यहाँ पे भी टाइगर्स मिलते हैं। ओके, ये जो मेल घाट वाला एरिया है ये आपका सतपुरा रेंज में है, ताप्ती रिवर बह रही है यहाँ पे। हाँ, तो इसको याद रखना है। तो आपके महाराष्ट्र के एक नॉर्दर्न घाट्स के नॉर्थ में एक ही है, ये सह्याद्री है। आ, याद रखना है आपको, ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि सबसे बड़ा है। काली, जो कि काली रिवर पे नाम पे है, गोवा से सट रही है। और लाइक आपका भद्रा टाइगर रिजर्व है, भद्रा रिवर पे है। और ब्लैक पैंथर यहाँ मिलता है काली रिवर के सामने। ये जो क्लस्टर आपका बना है बांदीपुर नागरहोल कर्नाटक में, ये जो मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, आ, ये सब आपके तमिलनाडु में है। पेरियार और जो परम्बिकुलम केरला में है। पेरियार आपको याद रखना है इको टूरिज्म के लिए, वहाँ पे टाइगर टूरिज्म हो रहा है। ठीक है, सत्यमंगलम को भी आपको TX2 अवार्ड मिला है, ये याद रखना है।
और नामडापा आपका यहाँ पे, डाम्पा आपका एक्चुअली मिजोरम पे है इकलौता। नामडापा हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे टाइगर रिजर्व है। नामडापा में चारों लेपर्ड मिलता है, चारों टाइप का टाइगर मिलता है, क्लाउड लेपर्ड, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और टाइगर। कामलंग में आपका ये वाला फ्लोरल डेंसिटी बहुत है। काजीरंगा में औरंग आपका मिनी काजीरंगा है। आ, बक्सा आपका नेपाल, ये भूटान से जाता है। मानस भी आपका आ, भूटान कॉरिडोर से जुड़ने के लिए रास्ता है। सो ऐसे ऐसे करके यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व in country right now, and I think most of them we have covered holistically.